Hello students, we will clear now our customer payment. For that, go to financial accounting, account receivable. So हम लोग यहाँ पर जाते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड F-28 incoming payment. Enter your date, enter your ledger, bank account ledger, enter your date, value date, and then your vendor account. Sorry, customer account. Then click on process of an item, press enter, enter amount. Okay, press enter, and then we have to select our invoice. We will select our invoice as a $1,200. Okay, now come back, enter postal key to 40, then enter our bank ledger, press enter, and then enter our amount 1200. Enter your value date 10/5/2024, and then click on document, simulate, and then click on post button. Now come back and go to account FPL5N, enter our customer account, change to open date 10/25, and now क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन. तो देखो हमारी 1200 की 30 अप्रैल की एंट्री क्लियर हो चुकी है. कम बैक, वी विल चेक ऑन क्लियर्ड आइटम नाउ, देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन. सो यहाँ पर देखो हमारा 1200 का एंट्री विद क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर अपडेट हो चुका है. तो ये था हमारा वेंडर अकाउंट क्लियरिंग.